बाल्को और उसकी होल्डिंग कंपनी वेदांत समूह की तेज प्रगति ने बड़ी संख्या में देश भर के युवा इंजीनियरों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यही वजह है कि यहाँ कैरियर निर्माण के मिल रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में वे खींचे चले आ रहे हैं। पिछले दिनों बाल्को के मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री शरद गोयल ने प्रशिक्षु स्नातक इंजीनियरों का स्वागत करते हुए बताया कि अलौह धातुओं के क्षेत्र में वेदांत समूह निरंतर बुलंदियों की ओर अग्रसर है। उन्होंने युवाओं से श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन करने का आह्वान किया। 4 जुलाई 2007 को 28 प्रशिक्षु स्नातक इंजीनियरों का स्वागत बाल्को के मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री शरद गोयल ने किया। उन्होंने चयनित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उनके लिए वेदांत समूह में बुलंदियां पाने के सुनहरे अवसर मौजूद हैं। बाल्को संयंत्र 2 के मानव संसाधन महाप्रबंधक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने प्रशिक्षु स्नातक इंजीनियरों को बाल्को प्रबंधन की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। इस मौके पर प्रशिक्षु स्नातक इंजीनियरों ने बाल्को अधिकारियों को अपना परिचय दिया। And I have a younger brother who is studying class 10 in Kharagpur itself. And my hobbies are listening to music, cooking, and doing handcraft jobs. From LD College of Engineering, I have done BE in Electrical Engineering. And my father is doing government job in Kujari Handicraft. He's retired now. My mother is a housewife. I have 2 elder brothers. Both are married. Eldest one is in police department. Second one is a lecturer in Bhuj Polytechnic College. My hobbies are reading, cooking, listening to music. I am Elil from Coimbatore, Tamil Nadu. I completed my BE Science Mechanical Engineering course from PSG Tech, Tamil Nadu. My father is working in a private company as an executive person and my mother is a housewife. My elder brother has completed his BTech and he is working in a company over there. My hobbies are drawing and collecting coins. I completed my BE in Electronics and Simulation from New Western College of Engineering in Tamil Nadu. And my father is a businessman, my mother is a homemaker. I got an elder brother as well as an elder sister. And my hobbies are reading, listening to music and so on. युवा इंजीनियरों ने अनेक सवाल भी पूछे जिनका समाधान श्री गोयल और डॉक्टर सिंह ने किया। देश भर के उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों से चयनित युवा इंजीनियर बाल्को में कैरियर बनाने का अवसर पाकर अत्यंत प्रसन्न हैं। कुछ कर दिखाने की उत्कंठा उनके चेहरों पर स्पष्ट देखी जा सकती है। उनका मानना है कि बाल्को की होल्डिंग कंपनी वेदांत समूह तेजी से प्रगति कर रहा है और वे इसकी तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हैं। यहाँ पे आने का मकसद जो मेरा था वो मुझे आई वांटेड टू गो टू ए प्लेस विच इज़ वेरी क्लोज टू नेचर विच आई वुड बी एबल टू वर्क इन माई एरिया ऑफ स्टडीज़ एंड आई एम एंजॉइंग माई जॉब नाउ। आई एम एंजॉइंग द लर्निंग प्रोसेस। आई एम लाइकिंग दिस प्लेस। थैंक यू। I come from an institute where I had opportunity to go to a lot of other companies also, but the only thing that I was pretty interested about Vedanta was it was into my core sector, and the other thing was its financials were very good. I came to know the profit that Vedanta is generating over these years. It's exponentially rising, and I am one guy who is very interested in learning about numbers and the amount of money that the company is generating for the country. I was impressed about this. My contribution initially at this stage, I am learning about the culture, and after that my contribution would be giving productive inputs to the firm at my workplace, not only technical inputs, but about inputs which might affect the working environment, relationship between the engineers and the other workers,
relationship between engineers and the higher executives. I think I will contribute in these terms. I am very glad being selected in such a great company. Being an environmental engineer, I think I will get some better scopes here, as I am quite environmental friendly, and here everything is just natural, the surroundings and that. So regarding that, and one more thing I noticed here was about the cooperative social responsibility, which I am very interested in. So I think I'll get greater scopes here. I'm very glad that I'm selected in this company. I'm basically electrical engineer, so apart from my electrical, I will also get to know about the aluminum productions and other than my electrical. I think I have better opportunities as it consists of 2 power plants, captive power plants, so good opportunities apart.